सो वेलकम स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में आपको दिया है z-1 बाई z+1 इज प्योरली इमेजिनरी। ऐसा है तो मॉड z का वैल्यू कितना होगा। सो इसको भी हम दो तीन अलग मेथड से करेंगे। सो द फर्स्ट मेथड इज स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, अलजेब्रिक मेथड। सो लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। z के प्लेस में x प्लस आई वाई पुट करेंगे एंड यूर आस्क्ड टू फाइंड मॉड z, दैट इज रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। And the condition given is z-1 by z+1 is purely imaginary. That means इसका रियल पार्ट जो है वो जीरो होना चाहिए। So इसका रियल पार्ट को जीरो इक्वेट करके एक इक्वेशन आएगा। उसी इक्वेशन से आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू को थोड़ा सा गेस करना पड़ेगा। So let us see what happens. So z-1 by z+1 is equal to x-1 plus iy by x+1 plus iy. सो इसको मैं रैशनलाइज कर लेता हूं। सो x प्लस 1 माइनस आई वाई, एक्स प्लस 1 माइनस आई वाई से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं। नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मल्टीप्लाइंग ईच एंड एवरी टर्म, सो आई वांट इंटरेस्टेड इन ओनली द रियल पार्ट ऑफ z-1 बाई z+1 इज इक्वल टू। सो रियल पार्ट आने के लिए आपको रियल पार्ट मल्टीप्लाई करना है, इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाई करना है, सही। सो यू गेट x minus 1 into x plus 1, that is one part of the real part, and iy into minus iy, that is minus I square into y square, that is plus y square, divided by कुछ रिमाइंडर आएगा। I'm not interested in remainder because this is equal to 0. z-1 by z+1 is purely imaginary. That means real part of this has to be equal to 0. So denominator निकालने का जरूरत नहीं है। So this is equal to 0. This implies x square minus 1 plus y square is equal to 0. This implies x square plus y square is equal to 1. This implies mod z is equal to 1. रूट करने के बाद भी 1 है, so mod z is equal to 1. So option A is the right answer. तो इसमें हम ज्यादा सोचे नहीं, जनरल अलजेब्रिक मेथड z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई पुट करके आगे चले गए, ठीक है। सो लेट अस डू सेकंड मेथड जिसमें हम ज्योमेट्री को यूज करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ z-1 बाई z+1 इज प्योरली इमेजिनरी। इसका मतलब है आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 बाई z+1 इज इक्वल टू प्लस आर माइनस पाई बाई 2, है ना। प्योरली इमेजिनरी का मतलब है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट जो है आइदर प्लस पाई बाई 2 होना चाहिए या माइनस पाई बाई 2 होना चाहिए, ठीक है। सो नाउ लेट अस ट्राई टू एनालाइज दिस। z-1 बाई z+1 का मीनिंग क्या है। सो एक 1 है, एक -1 है, एक +1 है। आर्गन प्लेन में यू हैव +1 एंड -1 हियर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 बाई z+1। सो एज्यूम दैट यू हैव a complex number z here. So z+1 is the ray joining -1 and z. So z+1 represents a ray joining -1 and z, and z-1 represents a ray joining +1 and z, ठीक है। So this is z+1, this is z-1. So argument of z-1 by z+1 is nothing but the rotation that happens when we move from z+1 vector to z-1 वेक्टर। इसका मतलब z+1 वेक्टर से z-1 वेक्टर तक अगर रोटेट किया तो जो एंगल बनेगा दैट इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस। आप कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, उसमें आएगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 by z+1 इज नथिंग बट दिस एंगल, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज आइदर प्लस 90 डिग्रीज और माइनस 90 डिग्रीज। सो प्लस 90 डिग्रीज है तो ये भी 90 डिग्रीज होगा। सो इफ दिस इज 90 डिग्रीज इज ऑल्सो 90 डिग्रीज। So can you see that z has to lie on the circle with -1 and 1 as diameter, तभी आपको 90 डिग्रीज मिलेगा, ठीक है। Hence z has to lie on a circle whose diameter is made by 1 and -1. So diameter 2 होना चाहिए, center 0 होना चाहिए, and mod z will be equal to 1 क्योंकि यूनिट रेडियस वाला सर्कल में है z। So mod z is equal to 1. So option A is the right answer. Thank you.